Hi everyone, welcome back to Gate Lectures with Pepcoding. I hope you are doing well. So last lecture में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखा था. आज मैं आपको बताऊंगी कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है, right? So without any delay, let's get started. Let me just share my screen with you guys and we'll get started. So the question arises here is that when is matrix multiplication defined? हम matrix multiplication को कब define करते हैं? ठीक है. So basically we define matrix multiplication when number of columns in the first matrix, the number of columns in the first matrix must be equal to number of rows in the second matrix. Okay. To the number of rows in the second matrix. Okay. Let's suppose मेरा first matrix is 2 cross 3 और मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से, that is 3 cross 4. This is possible. ठीक है. As number of columns in my first row is equal to number of rows in my second matrix. Got it? So this is very much possible. So this is true when this is m cross n. ठीक है. अगर मेरे पास first matrix is m cross n और दूसरा matrix मेरे पास अगर n cross k, m और k कुछ भी हो सकता है, n भी can be any number, but दोनों का this terms has to be equal. ठीक है. That means first matrix के column needs to be equal to the second matrix के number of rows. I hope this is clear to you guys. ठीक है. So this is the condition. क्या condition है? First matrix can be m cross n and my second matrix needs to be n cross k. So my first matrix number of columns needs to be equal to the second matrix number of rows, right? So इसके ऊपर हम कुछ questions करते हैं. ये मेरे पास दो questions है. हमारे पास मैट्रिक्स A हमें दे रखा है, मैट्रिक्स B हमें दे रखा है और मुझे बस ये बताना है कि क्या A into B मैट्रिक्स डिफाइंड है या नहीं. So मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कैसे डिफाइन होते हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज हैं, राइट. हॉरिजॉन्टल आर माय रोज एंड कॉलम्स आर माय वर्टिकल. तो और दो हमारे पास कॉलम्स, ठीक है. और इसमें हमारे पास कितनी रोज है, इसमें हमारे पास 2 रोज है and 2 columns. Since number of columns of matrix A is equals to number of rows of matrix B, hence A into B is defined. So my answer is yes, option A. Wait. Similarly, मेरे पास question number 2 है, that is मेरे पास C matrix defined है और D matrix defined है और मुझे बताना है C into D matrix मेरे पास defined है या नहीं. ठीक है. तो C matrix में number of rows कितनी है, 2, number of columns कितने हैं, 4. We can see vertical lines कितने हैं मेरे पास, 2, horizontal lines कितनी है, sorry, horizontal lines is 2 and vertical lines are 4, right. Similarly, D matrix में मेरे पास horizontal lines कितनी है, 2, number of rows कितनी है, 2 और vertical line कितनी है, 3. ठीक है. Is number of columns in matrix C is equal to number of rows in matrix D? No. Hence C into D, that means multiplication of C matrix with D matrix is not defined. So the answer is no, right. And why it is no? Since number of columns of matrix C is not equal to number of rows of matrix D, right. I hope you guys are clear with this. इसी के बेसिस में आपका एक क्वेश्चन है, राइट. हमें दे रखा है A is 4 cross 2 matrix. ठीक है. हमें गिवन है क्वेश्चन में कि A is 4 cross 2 matrix
एंड बी मुझे गिवन है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स A into B डिफाइंड, A into B डिफाइंड होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2 एंड मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। सिंस दे बोथ आर इक्वल तो मैं क्या बोलूंगी A into B मैट्रिक्स मेरा डिफाइंड है। बट B क्रॉस A में क्या हो जाता है, B क्रॉस A में मुझे क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ columns of B matrix should be equal to number of columns of A matrix, ठीक है। number of columns of B matrix is what is 3 और मुझे A matrix का देखना क्या पड़ेगा number of rows, क्या लिखना है इसका number of rows, वो कितने हैं, number of rows in matrix A is 4, so since they are not equal, hence B into A matrix is not defined. Hence the answer is no. Right. So I hope this is clear to you guys कि कैसे डिफिनेशन आती है, and I hope आपको याद होगा कि अगर मैट्रिक्स में दे रखा है M cross N where M stands for number of rows and N stands for number of columns. I hope this is clear to you guys. So that's it for today's video. Thank you so much. Goodbye.